Hey, hi Amit. I have some doubt. Can I ask? Yes, sir, we can start the session. Yes. Yes, please ask, please. Yeah. Uh, it's not regarding to course, but it's regarding to the laptop. So we have done some in firewall and the simulation and everything, the network related. So what kind Mhm. of specifications if you want to take a laptop for only for network some site, a small doubt. So what is your requirement really? Can you please go ahead and let me know more about that? Totally regarding to what the network engineers do, they do know like GNS3, Cisco packet tracer, and this firewall stuff, virtual machines, all this stuff. No, so what kind of laptop that required to only for network thing? So Okay, okay. Yeah, Abhiram, I got it. So if you have requirement of running Fortinet firewall images as well as few Cisco images for doing your lab, then you do not need much more configuration. If you are having at least 16 gig of RAM and 500 gig of SSD, then that is enough. Okay. Because Fortinet is not a very big and lengthy image. It is very small in size, and you just need to upload and you will start working on that. That is very simple to go, right? It doesn't require much if you need as a laptop for configuration. Don't worry about that. If you have your laptop ready or handy with you, then you can share your screen as well. I'll be guiding you what are the requirements or what virtualization software you should install in your laptop. no, Okay. right now not there. So going to buy. So that was the reason I'm asking. Okay, you are going to buy. Okay, no worry. Once you are going, then just uh, ask before. Okay, Sure. just send me the requirement, and after that, I'll be suggesting you what type of laptop you should buy. Okay. Yeah. So right now, what I am having that is very big, and because I am having trainings and labs up to CCI security, so we need much high level of configuration or specification in our laptop. So that I have, that is very big in the term of configuration. But for doing small labs, like if you are saying Cisco packet tracer, that doesn't require much, right? But packet tracer in itself is very slow. Okay, that is not fast. But if you are saying you need to do some lab related firewalls, and you are saying you need firewall like Fortinet, then I will suggest not needed to take very much uh, higher level laptop. No, on the very medium or lower level it will work. But if you are asking for uh, that where you will run Cisco firewall, then that is not okay. Cisco firewalls, despite ASA firewall, if you want to go for the any next gen firewall of Cisco like FTD, then that requires more RAM and other configuration actually. Okay, but if your need is only for Fortinet and other Cisco stuff, that is okay. Sir, Okay. Yeah. sir, Mhm. 8 GB RAM laptop is okay, or it would be have it have to 8 gig be RAM, yeah, 8 gig RAM will work. 8 gig RAM which is enough. No issue. Okay, so for running. lab would be in your server, no? So we have to run on this only. Okay, listen, if you have 8 gig of RAM and you want to run these labs on your own laptop, even you will be able to do. But if you want to take our server as a lab as a service, so that doesn't require really any such configuration, because you just need your laptop where you have browser ready. That's it. Okay. Yes, yes. Even using your phone, you can take access of that particular lab. Okay. Why I'm saying, let me show you why I'm saying. Just allow me one moment. I am going to share my screen and will let you know, guys. Okay, if you are seeking help towards the lab requirement, how you will set up your lab, so you do not need to worry for that. I'm here to help you and guide you how to set up lab step by step. Okay, and how to take access of those labs. That is very simple part. You not need to worry about that. You just have to just start following instructions step by step,
And once this course will be finished, you will have complete and 100% understanding on your topic, on your technology, how to access labs, how to access those firewalls and other stuffs, and how can you configure things like a pro if you are going in a company, or if you got chance to work similar type of infrastructure or in different type, even you will be able to design those infrastructure that will be easy for you. Okay, so not need to worry on that part. That is up to me and up to us. Next gen IT course will be there to help you guys on that. The thing you need to take care is your content, what you guys are getting taught here. Okay, so allow me one moment. I'm going to show you that particular lab, what I'm going to show you. 1 minute only, guys. Yeah, any other question meanwhile, please ask. Hello, sir. Hello. Yes, yeah, Shubham. So, sir, my question was, will we be able to run both GUI and CLI of the Fortinet with the specifications that you just mentioned? Yeah, everything. Okay. So once guys understand, everyone, once we talk about any firewall, guys understand. So nowadays in a market, in this market, we guys, if talk about next gen firewall, means we are talking about GUI mode of that firewall. Okay, why I'm saying GUI mode? GUI mode I'm saying because uh, things will be working like a you run application. Yeah, how many of you guys already run application like Facebook? Like Facebook is the good example. How many of you? Or Instagram? All of us, Rafi. Yeah, definitely all of us, right? Everyone. If not Facebook, nowadays Instagram, most of us are running, right? So point is here, do you been asked, or do you ask anyone how to click on what option and from where I can upload images, from where I can upload reel feed, all these things? Yes, no? You ask from someone to do so? We never did. We explored ourselves somewhere down the line. Yeah, definitely. So Fortinet Firewall GUI is similar to that. If you want to do, everything is planned and so good represented there in their GUI mode. Even you will see and you will come to know, okay, this means that, this means that. Very simple GUI they have. Even whatever firewall I have given training on, this is the very good, and I am very fond of using Fortinet firewall. Actually, they have wonderful and very simple infra where an interface, you just go and you will start doing configuration. Once I will show you that GUI, you will say, okay, yeah, really, this is very easy, and you will understand what you are doing there. Everything is well mentioned on the GUI. Once I'm saying GUI means what? GUI means you'll get access of their graphical user interface, means everything you will see like an application like Instagram, Facebook, and other applications you guys see on daily basis in the similar way. But if you come to the CLI part, Shubham, so Yes, at sir. there you have all the access what you are getting on the GUI. Even in CLI, you have more options than your GUI. Okay. Yeah, I So, know. so FortiGate firewall, you can configure in both the modes, in GUI, in CLI both. They have rich wonderful options and functionality already for their users. So there are few features which we cannot enable using GUI. So for Okay. those, throughout the class you guys will see those are the functions which you cannot enable using GUI. So you need only CLI to enable that. Okay, so no need to worry. There are few things. If you talk about ASA firewall, let me come. Okay, I'm not showing any PPT till now. So Yeah, you can just like start sharing your screen. That would be better. Thanks. one sec, guys, I'm just going to show you. Okay, a moment. मैंने आपको नंबर दिया है नंबर पे
One sec, guys. Yeah. Sure, sir. No worries. Take your time. Sir, have you muted yourself or you're not speaking at all? Now I'm audible. Hello, hello. Yes, sir, but it seems like that your screen has frozen. I think yes, because of few internal rights. I think one sec. I'm going again to show you. Okay. Is this now going? Is the screen through, guys? Hello, Yeah. hello. Yes, Hey, sir. yeah. I guess there's a request from Lakshman to conduct the class in Hindi. Okay, Lakshman, no issue. So, guys, do you have understanding of Hindi well? Everyone understands that? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं आप करा लो Yes, we can do in mixed language. Yes, we can do, sir. ओके लक्ष्मण इफ यू हैव लक्ष्मण अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो सॉरी हिंदी प्रश्न फिर Sir, ज्यादा I हो can जाएगी understand हिंदी English also, but क्या है लोकल लैंग्वेज में जितना समझ में आएगा वो इजी होगा हम लोग के लिए या क्योंकि नो वरी डू नॉट वरी अबाउट दैट मैन ऐसे क्वेश्चन तो बहुत है सर लेकिन आप स्टार्ट कीजिए बीच बीच में जो क्वेश्चन रहेंगे वी विल रेज दी यू नो सो गाइस या क्वेश्चन let me start so questions should be there actually I do appreciate so many questions should come okay so point is so let's start the Fortinet firewall training from here so just I will ask everyone to go ahead and please read it fast. Okay, this is the something which is about Fortinet. Not very much you guys are already familiar with. Like once we talk about any firewall, most probably firewall means what? We are talking about to our safety. Okay, our safety means our infrastructure safety. If you are working in a company, so if you are deployed with firewalls, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपने अगर फायरवॉल डिप्लॉय कर रखा है अपने कंपनी में मींस आप क्या चाहते हो वहां पे कि कोई भी अनइंटेंडेड अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस ना करे और ना ही मेरे कंपनी का कोई एम्प्लॉय किसी भी ऐसी वेबसाइट को जो कि इन्फेक्टेड है जिसपे वायरसेस हैं मालवेयर्स हैं वो उस वेबसाइट पे ना जाए okay so if somebody from your internal company some user from your internal company wants to access some website which has virus or trying to download some content from web
which has virus inside that. So your firewall will not allow to do that. Okay, so who is firewall? Firewall is actually saving your internal users to go outside and download something from there and bringing something from outside to inside, as well as if someone from outside directly user on internet wants to come in your company with bad intent and not authorized to. So firewall is there set with so many instructions and predefined rules, who is acting according to that, just like security guard you place in front of your society's gate. Remember, guys, any of you have ever been like this situation, like once you are trying to enter into any society, the security guard in the gate is asking you to stop and asking few relevant questions from you. Have you ever Never been? done that illegally, but yes, most of the places we've never been to. Yeah, definitely. In the same way, the security guard is there for what reason? Protect the building. Definitely, there are some set of rules, something is there, some rule and regulations are already deployed in for that particular society, and that guard is instructed to take care for all the parameters is being followed once someone is coming or going outside. Similar way, firewalls are working in for your company users, for your company services. Okay, making sense, guys, on this, understanding it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर इसके साथ कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन? For what? For Fortinet? Yes. Yeah, if you are, so see, most of the firewall companies, including Fortinet, they provide you simple and basic features free of cost. Okay. So once you are going and purchasing your Fortinet license, means you are going and purchasing license for next gen firewall. Now, very soon I'm going to tell you, okay, listen guys, this is the very first day. We'll most probably will talk about only introduction part. But from tomorrow, okay, anyone from the company, please instruct me if we should start today, or because what I am thinking here for today, let make it only the introduction class. From tomorrow, we'll be jumping on the all the things like So Fortinet, it how to could be a deploy daily that. basis classes, or it could be on weekend only. You will be getting all the message from the management. Okay. Okay. So I think till now what information I have, that is weekend class we are running right now. But if you are interested for weekdays class in your off time, like from 9, 10 in evening, in night, okay, all these things. Yes, You just we can have, both timings, Monday to Friday evening 9 p.m. and Saturday, Sunday morning 10 a.m. Whatever time slot will suit you, we can go ahead with that. And हिंदी इंग्लिश सर कर सकते हैं सेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में कंटिन्यू कर लीजिए if students are comfortable. yes, Yes. Hindi, English and Sanskrit, sir. That is why I'm telling you, local language में तो comfortable ज़्यादा होगा. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण. No worry, Lakshman, I am here to help you, okay? Otherwise, the English I think I am speaking, that is not much hard, right? I'm No not. problem, no problem. You can, sir. I'm actually using words which is very familiar for Indian people. Once any UK or USA student is coming, then I start and switch that language, okay? Because they need something and they understand almost every word because they are very familiar with every word because their native language is English, right? But we people, in India, I do speak very simple English. Even what I know, I listen from my colleague, from my other students in India. So I just always be in that mode only. Okay, no issue. We can talk in English and Hindi. Means English also will be okay. No worry. थोड़ा सेशन हम आज इंट्रोडक्शन का और थोड़ा सा बेसिक लर्निंग भी रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फंडामेंटल की. एंड मोरो डे 1 से स्टार्ट करेंगे. Yeah, okay, I'm fine. Yes, guys, you are fine. So Yes, sir. let's do it little quick because we have almost half of the time has already gone. It was planned for 1 hour only. 26 minutes already gone, so no issue. So now I think you have concrete idea about what firewall actually does for your company, right? So this is that. So let's see this course.
Who is this course for? So now you connect and you put in these slabs. Anyone network engineers looking to specialize in firewall and security solutions, IT professionals aiming to transition into cybersecurity roles. Not only cybersecurity here, guys. If you want to get promotion, or you want to be promoted in the company, you know only routing and switching parts in the company. If you are having these type of professional courses, training and certification, then definitely you can be promoted in the company. Understood thing. System administrators managing network security. So you are, if already in the same role like network security engineer, you are working for your company. So if you are having this course, then most probably it is going to provide you benefit. Or any student who is fresher interested in network security careers. So guys, agar koi fresher hai to no need to worry, because I am going to start this training from level 0 and will reach at end level. Okay. So every part will start from scratch. No experience required, really, guys. Believe me. And once you will start, you will understand everything step by step. So this is the company's hiring, guys. Once you have completed this course, so what you expect as a salary? So let me tell you my personal experience with Fortinet first. So guys, understand, at every year, 2 times per year, Fortinet itself they hire people from outside. And what are their expectation? They just want their candidate should have understanding of security concepts, and if they have knowledge of any firewall from any vendor, or just have knowledge of VPN and other parts, they are very happy to hire you in their company. And the job offer, if you are getting from Fortinet, that will always go beyond 12 LPA, guys. It doesn't matter what level you are working right now. And cracking interview in Fortinet is easy, not hard. Okay. So, but if you have already understanding of Fortinet, then that is really extra advantage for you if you are sitting in the interview. Making sense, guys? You're understanding it, right? So Fortinet itself hires 2 times in a year. And once you are appearing for that, and you are having certification on Fortinet, not very costly certification, but if you have only knowledge, you attended some certification course, even you'll get benefit to be hired. They are not expecting much from you, because they already believe how simple infra they have, how simple interface they have, and how other people or any fresher person is coming and can use their interface and start doing their job. So and what roles you can join, see here, this is already showing on your screen. Pre-sales, security consultant, network security engineer, technical support engineer, SOC analyst, firewall administrator, cybersecurity consultant, IT security analyst. Okay. Even you can join tech, their tech team also you can join. Okay. Making sense, guys? Understanding the expectation part here. But if you are going in general market, so this is the salary expectation, what you can expect as per slab is mentioned at the bottom side of the left corner, you can see. Okay. So these all are the things which you are going to get throughout this course. So live classes I'll be conducting. Okay. Hands-on labs and real-time scenarios I'll be showing you by taking access of the lab, which you guys also will have access. Or if you do not have, then I'll be helping you guys to set up your lab. Certification preparation, if anyone want to do, then just reach me out, or our team, they'll be helping you, and I'll be giving you instruction how to be certified. Okay. And like you'll also be getting the class recording, and if you also will get support in interview preparation, and also I think there is some job assistance support also you guys are going to get. And once let me talk about myself. So guys, my name is Amit, and I'm speaking, it's been 20 minutes here.
So guys, let's talk some experience of myself first. So guys, it's been time. It's been more than 15 years in the industry. I've handled so many different projects. So first project I handled was satellite project. I worked for Dish TV. You guys know about Z News? So that was my Yes. first client. I worked with them for their IT infra, and I worked there on routing, switching, not on the security part very starting. No, I started there from basic steps like how router should work, what should be the implementation there on routers, and also that their local infrastructure, all those parts I worked on. After that, I moved in Jindal Telecom, and I worked in the telecom industry to set their voice over IP, like how the users will be talking with the clients, and what should be the good implementation and better way of doing of those things. I worked with them. After that, I switched with the tech company, health tech company, and I that was the startup. I was there with the team to set up everything from scratch till top level. Then I started working in different MNCs also. There are few constant from and still I'm working with very top company. I will not mention here the company name because of the guideline of the company. Okay, if you guys want to understand more, then you guys can connect me later. I'll be telling you about the company as well. Okay, it's been time. I'm working in the industry as a network consultant, security consultant, network engineer, senior network engineer, sometimes in some of the company IT manager. So many job roles I worked with. But what I like in my life, providing training, guys. So this is what is my passion from last of my 15 years. So this was brief about me. So this is the course curriculum, guys. Let's jump to the topic now. So what you will learn. So right now I am showing you all these modules. You guys go ahead and see, please. Okay. Please see this very fast and come with if you have any question. Bro, what's the difference between these Fortinet and Palo Alto firewall? Are they same usage or the difference one? No, they are there for same usage, but the internal and backend functionality is different. Okay. For example, They you and having I, many features in like different firewalls, right? yeah, yes. So policy configuration and deployment can be differ, and their working in the backend also can be differ. But at the end goal, end result, or end outcome is same. Okay. The firewall in general. So firewall is there to safeguard for your company users and services you are making available for public users. Okay. So end goal, end outcome is same, but configuration manner and their backend working is different. Okay. And if as a network security engineer, if you're asking, so definitely Fortinet is more simpler than Palo Alto configuration and understanding their packet flow and way of doing. Fortinet, you will find most of the things very easy. Okay. Understood? Yes. Yeah. So in module 1, you'll guys be getting introduction or to Fortinet and FortiGate. So that most probably I will start from tomorrow. So everything, okay. In second module, basic configuration, like I think you will get here routing and switching part also. How firewalls actually do routing and switching, you can apply also in that. So the firewalls, most of the firewalls you will see, guys, in industry, they have access of feature of like layer 2 deployment and layer 3 both. Okay. In module 3, static and dynamic net configuration, antivirus, web filtering, and IPS. This is module wise structure you are seeing on your screen, but that can change during our class on the basis of your understanding. Once I will check what level you guys have understanding on these topics before, or how many people are here who is fresher.
On the basis, I will be altering this particular module. However, I will cover everything in detail. Nothing will be left after finishing the course, but I can change the sequence of the modules here. This is not the sequence. This is the complete module you guys are going to see. VPN also you guys will see. So I was mentioning right before, once you want to join Fortinet as an engineer, then you can join if you have good understanding on these parts in VPN configuration part even. They will don't mind, okay, to hire you. So this was it from here. One sec, guys. Let me share my screen and let me help you to go on other parts. One sec, guys. Okay, yeah. Any questions so far, guys? So since you mentioned about the possibility of getting into TAC, I guess that would require some in-depth knowledge about Fortinet, I guess, right? Yes. Because TAC requires us to troubleshoot many issues on a day-to-day basis. Yes. So once you are certified in the Fortinet, you have good knowledge and you are appearing for interview in tag, so that is good for you. If you have good comm skills, you want to do work in tag, so you can apply for that and just appear the interview. Most probably people get selected in that. Why? Let me tell you why. Because at very first day you will not be jump to your work. You will be taking guidance, or you'll be taking training by sitting aside of some other expert person. Once they are solving issues and how they are dealing with, okay, they require your good comm skills at that time, and the things of that is called T-shoot skills will come throughout the journey once you will start working. Okay, this is the part actually from where you can start. Okay, got it? Yes, sir. Okay. So guys, I had one very wonderful lab here ready. Let me take my server's access. Okay, I am already requesting in the backend to take access. Allow me, I Sir, think it I will have take a 2 one minutes. question. Yeah, If please, I guys. want after the class, if I want lab access, so I can do any time. No, if I want in a night time, means I'm getting free time in a night like 8 to 10 and 10 to 12, so I can access the lab. Mhm. Yeah, lab I- access we are providing, guys. Don't worry, that will be 24/7. Credential you will get, and you can configure that. And Amit sir will help you from the scratch to build lab, right, Amit sir? Yes, sir. Actually, I have lab ready. So once I will give them training, na, I'll Yes. be helping them to understand how they will also make their lab from scratch. That is very simple thing. But point is here, once I'm making those labs ready, so I'll be starting from scratch, like what device we should take, everything I'll be showing them. So right now I'm taking access of my lab, which I have right now, server. Once I'm getting access, just allow me 1-2 minutes, guys. Server is coming up, okay? After that, I'm going to show you about all the things here. Yeah, one sec, guys. Sir, in firewall there is a feature. There is a one feature of auto failover, right? हम्म, फायरवॉल में भी ऑटो फेलियर होता है या होता है जी, अच्छा but they are hot standby. हाँ हाँ Okay, hot ऐसा standby means what? रिक्वायरमेंट नो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नो Hot standby means one is down, the second one will come up. कम आपको राइट Okay, means at the same time, if you are deploying and you want to ask them, okay, can you work at similar time? They can work at the same time, they can work, but again, that you guys need to manage from your lower level things, like at your different architecture, like from your somewhere from your access switches or some what is that, another level of switches, you just need to take care for all those things. So you just need to deploy them in the high availability mode. Okay, once they are deployed, you need to take care from your down layers.
what type of traffic and in what direction you are sending through those firewalls. Okay. So I think lab is up. Apologize for taking your time, guys. This is very first day. And from tomorrow, most of the things you guys will be getting ready. Okay. So let me show you here. Let me share my screen. Again, it is so good. One sec, guys, one sec. This is already allowed, then why it is asking to... My screen is showing to everyone? Yes, I think yes. Yeah. Hello? Sir. Yes. So let me help you to make a good lab. Okay. The similar way I'm showing you right away. See, guys. Okay. Fortinet introduction. So just click on node. Everything I will tell you later on as well. I don't think I have here firewall. One sec, guys. Let's take access of another server. That is in another server. One sec. Not. I will not take much time. 1 minute maximum. Let me come out from here. So the lab thing and the lab topology I'll be sharing with you. You do not need to worry about that. Okay. And as sir from management is telling that you will be getting the access. So on that part also, you do not need to worry. 1.20 is that. Oops. No issue. 20. I am making this from scratch. Okay. Fortinet. So actually in the market, you guys will be getting training on 7.2.0 version. Okay, this is the code where Fortinet wants you guys to take understanding on. Okay, but the feature in the previous version also the same, so we do not need to worry about this really. Okay, so most probably I will use this one. This is FortiGate version 7.0.5. Features are same, nothing is changed in that. Few things from the backend and they changed. I am taking one FortiGate firewall for example. Let me save it. And I will just connect just to introduction, guys. Nothing less, nothing more. I'm taking and I'm giving access to this firewall of internet so that I can access using the same PC. One sec, guys. Okay. This is up.
Yes. What is the username? Okay. Why it's not coming? Admin. And password is blank. You do not need to put password first time. Once you will click enter, it will ask for the new password. So I'm just taking here simple 123. Now it is saying, okay, welcome. You are in. So right now I am in. So first thing what I will do here, that is config system interface, and I will go inside and will click on the edit port. Most probably what port I am connected. Anyone have idea? Port 1, right? I will edit port number 1 and will come here and set IP. Why I am doing this, guys? Let me tell you, I am doing this so that I can take access of my this firewall's GUI. Okay. Anyone is wondering what I did till now? Please Sir, ask. initially we have to do on CLI. Yeah, initial parts we need to do on CLI, like giving access. Let me tell you. So right now, if you want to take access of GUI mode of this firewall, so automatically it will come up with no IP configured with this. Okay. So what you need to do, you just go to your Fortinet firewall, connect using console or other medium, or on their management link. Go there, come in on their CLI, and just do configuration of all these initial requirements. Okay. Once you did configure IP, then oops, sorry. This They are seems to be asking. IP. Yes, sorry. I thought there was already an IP. It says can't change dynamic IP. Actually, on Okay, firewall you other must have parts, set up a DHCP, I guess. by default was DSCP, so I just changed the Hmm. mode in the static. Static, okay. So again, I need to go for this. Now it took right. Now go and do these things. This is very essential, guys. You just need to go there and set allow access. Ping. Means what? Right now, no access is allowed there by default. So till the time you will not allow access, you will not get access of this Fortinet firewall. Like what access we need? We need to enable on port number 1, taking HTTP access, HTTPS access, SSH, telnet, what other part you want to use on this port. To take access of GUI of this Fortinet firewall, we just need to allow HTTP or HTTPS. That's it. So I will do as required. So I will select here HTTP, How HTTPS. about ping? We won't allow ping. Yeah, you can. No, but SSH. usually, like for other users, I guess, who want to access the GUI, do they like by default do the firewall have access to ping or no? For them, Yes, the user. few companies provide like Cisco. Cisco do provide ping access for all their users, so they can ping their node from anywhere on the world, on the globe. But Mm-hmm. that again depend on the company. Okay. Mm-hmm. Making sense, guys? So I just put few commands here, but I don't know you guys will understand what that command means. So let me make it easy for you. Okay, first. After that, I will be jumping on other parts. So why I'm saying, let me tell you, because I will take GUI. Once you want to take, for example, any one of you arrange something where you have a lab and you want to do something and you are struggling with, so I do not want to be with you. Okay, 1 second, let me. So first what I did, it asked for the login username. I entered admin. Okay, then simple enter I entered. Clear, guys?
Mhm. Username I entered admin, and in password I just entered enter. Okay. New password it asked. I put 123. Confirm password it asked. Very simple stuff, guys. As you will do all these steps, you are logged in. Yes? No? You guys remember everything was happening there at the same time? See? Yes, guys. Yes. Say yes, no. Yeah. Yes. Yes. Good. So after that, what we did? We went to the directly where? To the config system interface. So what this command mean here? This command means you want to do configuration for what? Yes. Config system. So you want to do some configuration at system domain. Okay, where in the system domain? System domain means what? Once you will do configuration on this particular domain, means that configuration will be impacted your system globally. Means that Mhm. if that is applied, that will go on the global impact. Global means Okay. completely on that particular box. Making Hmm. sense? Yeah, I mean, Fortinet do have virtual domains as well. So instead Yep, of yep, those yes. virtual impacting those virtual domain, it would be impacting the box as in a global level, I guess. Definitely, yes. You're right here. The same thing I'm saying. But right now, what I'm expecting you guys to understand, just understand very simple, like config system interface. After that, what I did, I just checked my port and I selected that. Remember? Yes. Edit Yes. port under the system and interface. I'm editing port number 1 and I did this IP and all these things. Set mode static, set IP, then allow access. Understood, guys? I hope you guys are getting it. Yes. Yeah. And Why what only that IP address only? Can we keep another one? Yeah, Or you can keep, but make sure what IP address you are using here now. That was 1.20, right? It should be in the similar network, in the same network. Sir, sir, every Otherwise, time we you will have not to, be able to get access of their GUI. Yeah, tell me. sir, every time we have to uh, set mode like static DHCP, we have to put it over there, or No, so. if you have any DHCP server for different node, you want to provide IP there using DHCP, you do not need to go. Just go there and just it by default will take once you will change the mode DHCP. Okay. So see, I got the access of my GUI. Able to see, guys, everyone? yeah. Just enter the same password, guys. Begin. This is asking for the host name. I did not change there. I did not show you so many commands. Tomorrow I'll be showing you everything from 0, 0, 0, 0. Then we'll jump to 1. Okay. This is just I want to show you the GUI and CLI, right? Just the introductory part. So if you want to change the name, you can change. For example, I'm saying for FW1, firewall 1, and I'm saying okay. Okay. I am saying do not show this page again. It is something which is they will be giving you some introduction part like what is new in the FortiOS 7.0, what was not there in the previous version, what we added, everything you will see this. Now To see, configure, this is the page. bro, to configure that IP address, so we use it in CLI to access GUI. this Fortinet. Yes, yes, Okay. yes. You're right. Yeah, guys, see, now you are in. So from here, you can go and see so many things. This is the dashboard. What does dashboard means? Dashboard means how your things will look like here, right? Some glance on the go. It will show you graphs as well, graphs of the interface for monitoring the interfaces at times. Yeah, everything. See, if you are just
minimizing this and coming in the network. See guys, yeah, you can see graph and see here everything you are able to see. Current Utilization, sessions, traffic levels. yes. These graphs are showing utilization only, no? That this is for session, this is for memory, like how much memory you have and how much the current usage, how many CPU you have, that utilization you are able to see. You remember, you go in the task manager to see your own Windows Right, laptops right. usage. Yes, yes. So Yes, this yes. is all about that. This is all about your FortiGate firewalls internal specifications usage. See, these are the sessions, this is the current usage of memory, how much memory you gave. If you guys have seen that, don't mind for that. If you guys have seen that at the time of taking this node, then there it was saying, it was showing like how much RAM I am taking, how much CPU I am selecting, everything. So this is showing the current usage of that. So this was the dashboard part, which I will be telling you in more detail tomorrow. Let's go to the network. So see, interface is here. Let me show you the interface which we configured. This was the interface which we configured at the same time from CLI. See, able to see Yes. now? Yes. Yeah. One thing, see here, is shown in the red color. What does that mean? That means that is not allowed So from. please try to speak in English so we can understand very easily. So please. ओके, नो इशू लक्ष्मण. सो गाइज देखो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे रेड कलर की हैं. रेड मींस व्हाट? रेड मींस अनसिक्योर्ड. रेड का मतलब अनसिक्योर्ड. हाँ, सो HTTP है ना, वो S नहीं है. ओके. या HTTP अगर आप यहां से करना चाहोगे ना गुई मोड से, यही बता रहा था स्टार्टिंग में, तो गुई मोड से आप HTTP को इनेबल नहीं कर पाओगे. कैसे बोल रहा हूं ये देखो, मैंने पोर्ट सिलेक्ट किया, पोर्ट 2. देखो मेरा कर्सर पोर्ट 2 पे है. अब मैं एडिट पे जाऊंगा, इसी पोर्ट 2 के एडिट पे क्लिक कर दिया. यहाँ पे देखो, कहीं पे तुम्हें HTTP और टेलनेट दिख रहा है एक्सेस No. में? नो, नहीं. क्योंकि वो सेफ नहीं है. तो अब इशू क्या है कि हम जो वर्जन अभी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा वर्जन है? ये 7.0. कॉमर्शियल वर्जन नहीं है, ये ट्रायल वर्जन. राइट. अब ट्रायल वर्जन में अब कैसे इनेबल करें भाई? हमें HTTP का HTTPS का एक्सेस ही नहीं है. देन हाउ विल वी टेक GUI ऑफ दैट देन आवर फायरवॉल? नो वे ना. सो हमें इसीलिए जा करके CLI में उसको टेलनेट को और HTTP को अलाउ किया था. लेट मी शो यू गाइस. सी हियर. यस, HTTP टेलनेट, जो कि यहाँ नहीं है. यहाँ ये दिखा रहा है, कह रहा भाई सुनो, if you are enabling this, red alert from my side, red flag I am showing, don't use that. Why? They are not safe, Do they are one not doubt. secure. Yeah, in command line, you given. Can you show once again the command line? Yeah, sure, why not, man? I am here only for you guys. See, Yeah, here you given the allow access for HTTPS, Telnet, and ping SSH. So if I want to give SNMP not in here, so I can give in this Fortinet there allow access. 1 second. Yeah, you can give. You can Okay. give, but again, it depends if that is enabled in your box or not. Like, what depend? Let me Okay. tell you. What I'm Okay. saying, once you purchase this box, na, so you'll Yeah. go to the company and pre-sales team will connect you and will ask, okay, what is your requirement? Okay. Once you will be telling your requirement to them, so accordingly, they will alter your box and will enable your license accordingly. So you will get access of those features. Okay. Sir, here I have one question. So at times I've seen that there is a limit on the number of interfaces that you can monitor under that dashboard. So is it because of the limitation that the box has as per Yes. the requirements set by the company, or is it by default the Fortinet only allows a specific number of interfaces to be monitored? No. This is again depend on the box what you purchased. So once you will purchase and you have license for those features, what features are licensed, you can monitor them. Okay. And Again, that includes that the number depends. of interfaces, right? So where you are talking, like on the dashboard? Like in the dashboard, if you click on network Oh, under okay. the dashboard. Under the No, dashboard. under the dashboard, only the third option.
So I've Yes. seen that it only allows only like a number of interfaces. I've not seen like many interfaces. For example, I was able to monitor only like a handful of interfaces, like 4 or 5 at once No, only. see, The rest of the interfaces I was yeah. not able to monitor. What the things are available there in your licensed version, you can do all the things as monitor here. Okay. There is no such restriction like if you have license, you have authority, you have access to monitor them. They will not stop you, but for that you should have license first. But the Mm-hmm. version we are seeing here, we No, do but I not was need talking about license the version. licensed version. Like the licensed version, I was not able to like, already there were like 5 interfaces Mm-hmm. configured, Mm-hmm. and I was able to monitor them. And when I went in there to monitor the sixth interface, it didn't allow me to monitor that sixth interface. That's why I Yes. asked. So was you log in using your admin account? Yes, my own account. Yes. So you just need to talk with the vendor, right? Once you will Mm, talk them, they will help you to know how to enable that. Sometimes they disable that from backend. Once you will okay. connect, they will help you out to how to enable that. Okay. But make Mm, sure before going them, you have license of those interfaces. mm. Okay. Understood? Answered? Yes. Bro, Okay. is it licensed one or free one this you're showing? This one is the free one. Okay. Okay. So next gen firewall feature I'll be showing you, but the impact we cannot see in this version. But I'll be telling you with the proof, like if they really work or not. Like what I'm saying here, security profiles, antivirus, web filter, video filter, all these comes in your next gen firewall features. Okay. Okay. Yeah. So all एक बात these you सर will not get here in this non-licensed version, but feature I'll be telling you how they work. Okay. But the impact we cannot monitor here. But if you guys want to monitor that, so most probably, yes, sir, from management team, most probably someone is here. So I'll ask them to provide you videos on that, which already pre-recorded. So that will be very benefited for you guys. Okay. Where everything is shown by using the same feature. यस Okay. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर शॉर्ट में थोड़ा सा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दो लक्ष्मण के लिए और एक दो और स्टूडेंट्स हैं हिंदी में उनको हाँ कंफर्टेबल है हाँ सर, हाँ सर, ओके ओके, कर दूं? आप करोगे? यस सर आप कर दीजिए प्लीज ठीक है। लक्ष्मण और जो भी यहाँ पे भाई है, मुझे नहीं पता उनका नाम। सो मैं टारगेट लक्ष्मण को कर रहा हूँ अभी। लक्ष्मण, तो अगर नहीं आपको सर ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश भी ओके बट मोर कंफर्टेबल इन हिंदी क्योंकि नहीं, कोई बात नहीं। जब कभी कभी कोई हार्ड टॉपिक आएगा ना, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप सबको समझना बहुत जरूरी है उस चीज को, तो मैं उसको हिंदी में भी बताऊंगा। सो यहाँ पे मत सोचो कि मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा। मैं आपको हिंदी में पक्का बताऊंगा वो चीज, और लिखूंगा भी। देखो, मेरा मेरा क्या स्टाइल है बताने का, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे सिखाता हूँ लोगों को। मेरा मेरा टीचिंग का स्टाइल। सब कुछ तो मैं आपको लिख के दूंगा पहले। ऐसे जितने कमांड चलाए पूरे दिन भर में सब लिख के दूंगा। अभी आज फर्स्ट डे में नहीं दे रहा, कल से जब रियल का हमारा सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो जब सिलेबस कल से रियल का स्टार्ट हो जाएगा, तो जब वो चीज होगा तो आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ मिलेगा इन योर नोट। ओके। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। थियरेटिकल पार्ट भी आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको चैलेंज आएगा ही नहीं उसमें। अगर उसके बाद भी चैलेंज बचता है तो मैं हूं ना चैलेंज को किल करने के लिए। ओके। टीम है ना अपनी चैलेंज को किल करने के लिए। तो आपको इस चीज पे निश्चिंत रहना है एकदम, कि ये चीज कुछ समझ नहीं आ रही है या कुछ इंग्लिश में बोल गए उस समय। होता कई बार हमें लगता है हम समझ गए अभी इंग्लिश में, बाद में पता लगता है अरे तो समझ ही नहीं आया, क्या बोल गया है बंदा। तो उसके रेफरेंस में हमारे पास नोट्स हैं, उसके रेफरेंस में हमारे पास लैब है, उसके रेफरेंस हमारे पास वीडियो भी है। करेक्ट सर? वी हैव वीडियो। व्हाट दे गाइस गेट? यस या सो मेनी थिंग्स वी हैव। बट होता क्या है, ज्यादातर ट्रेनिंग मेरी इंग्लिश में ही होती है, तो मोड स्विच हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन हिंदी आती है भाई मेरे को। एंड गुड। अगर गाइस किसी को थोड़ा नेटवर्किंग का भी रिवाइज करना होगा तो जो एनरोल कर रहे होंगे तो सीसीएनए की वीडियोस भी कॉम्प्लीमेंट्री उनको प्रोवाइड कर देंगे डोंट वरी बहुत अच्छा। यही नहीं गाइस, अगर आपको इन ड्यूरिंग द क्लास कोई ऐसा चैलेंज है कि सर मैं आई एम स्टक इन दैट, और आपको लगता है कि मैं पूछ लूं, तो कोई बात नहीं, आप पूछ लो।
मैं देखूंगा अगर समय मिलता है तो उस पे आपको आंसर मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है। तो सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई लेवल की चीजें ऑलरेडी पढ़ाता हूँ। और फोर्टीगेट फायरवॉल ही नहीं, और भी बहुत सारे फायरवॉल हैं मार्केट में, चेक पॉइंट, पैलो ऑल्टो, सिस्को के जो भी हैं। ये चेक पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा खास करके विदेशी कंपनी, यूरोपियन कंट्रीज यूज करती हैं वाला फायरवॉल अपने इंफ्रा में। तो इस तरह के फायरवॉल भी हम लोग मतलब मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ। और कंपनी में तो बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो पढ़ाते हैं वो सारी चीजें। सो अगर आपके पास ऐसा भी कोई प्रश्न है तो डाउट के लिए आप पूछ सकते हो। अगर ऐसा लगता है हमें ज्यादा डाउट आ रहे हैं तो डाउट क्लैरिटी सेशन भी रख सकते हैं हम। सो दैट इज समथिंग विच वी रियली वांट टू डू फ्रॉम आवर हार्ट, जो कि हम हेल्प करना चाहते हैं स्टूडेंट्स का अंदर से, कि भाई उनको हेल्प हो, वो अंडरस्टैंड करे कॉन्सेप्ट को और रिटेन रहे उस टॉपिक पे। ओके सर सर ये इसमें क्या फायरवॉल को हम क्या डीएचसीपी सर्वर भी बना सकते हैं क्या? ये दिखा हाँ रहा था जी मुझे बिल्कुल। मैं बोल तो रहा हूँ फोर्टीगेट फायरवॉल इतना अच्छा है कि आप इसको डीएचसीपी अच्छा। सर्वर बनाओ। सच बिलीव मी गाइस, मैंने बहुत सारे फायरवॉल देखे हैं लेकिन इसमें नेटिंग तुरंत ही हो जाती है। आपका नेटिंग इंटरफेस हम्म। में मिलता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। नेट अलग से तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हर फायरवॉल्स में। इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। डैशबोर्ड वाला बंद करो और आप नेटवर्क पे जाओ। देखो मैं इंटरफेस पे आया, सब लोग देखो गाइस। हम्म। पोर्ट 1 को मैं ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, नीचे आओ। नेटिंग, अच्छा ये वाले पेज पे नहीं दिख रहा है, वैन लिंक है। आउटबाउंड, पहले तो डीएससीपी सर्वर वाला देख लो, देख लो दिख गया है। डीएससीपी सर्वर तुम्हें बनाना है। अब इस पोर्ट पे जितने लोग कनेक्ट करोगे डीएससीपी से आईपी पा जाएंगे, मतलब आपका फोर्टीगेट हम्म। डीएससीपी सर्वर की तरह ऐड कर रहा है। गाइस देखो अच्छा। सिंपल है ना, उसी के अंदर आपको मिल रहा है ना, सिंपल। ये चीज है। और इसमें एक मिनट में बाहर आता हूँ, ये अनडिफाइंड है। अगर मैं इसको मान लो लैन कर दूं बाय चांस, so most probably I should getting that particular here net. Don't worry, I will show you tomorrow. हो सकता है कुछ चीजें डिसेबल्ड हो बैकएंड से, मैं इनेबल करके आपको दिखाऊंगा। ओके सो नेटिंग वगैरह खुद हो जाती है इसमें। मैं चलो बाहर आ जाता हूँ, सेव नहीं करूंगा, इसको कैंसिल कर देता हूँ। बाहर आता हूँ, मैं लेता हूँ पोर्ट 2, एडिट करता हूँ। नेटिंग के लिए पूल बनाना पड़ेगा ना हमको, एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेंज का हाँ पहले तो पोल, आईपी नहीं तो पूल। इंटरफेस का नेटिंग ऑटोमेटिक लेता है। जो आपका हम्म। इंटरफेस मोड होता है ना नेट का, पैड का, हम्म। हम्म। वो डेटा ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक ले लेगा। और एवरी टाइम इट विल यूज योर पोर्ट। आप जब भी अपने कंपनी के अंदर से इंटरनेट पे जाना चाहोगे तो आपका जो भी इंटरफेस हम्म। पे आईपी होगा वैन और लिंक पे, ये उसको हम्म। यूज कर लेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं आऊं, आईपी सेम रहेगा लेकिन सबको यूजर्स को अलग अलग पोर्ट बटेगा ना, करेक्ट पोर्ट एड्रेस करेक्ट करेक्ट, ट्रांसलेशन होगा वहां पे। यस 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 मैन यस। राइट नाउ इट इज नॉट शोइंग, नो वरी। सो वंस दिस कॉन्फ़िगरेशन इज डन, तब आप इसमें जब जाओगे फायरवॉल पॉलिसी में, देन आप यहाँ पे देखो यहाँ फायरवॉल पे पॉलिसी में, ऊपर अपोलोजाइज फॉर दैट, गो हियर एंड क्रिएट फॉर एग्जांपल। आपकी इनकमिंग इंटरफेस पोर्ट 1 है, आउटगोइंग इंटरफेस पोर्ट 2 है, अभी अप नहीं है। सोर्स डाल दिया, डेस्टिनेशन डाल दिया, सी नेट इज ऑलरेडी इनेबल्ड हियर गाइस। हम्म। तो नेट आपको करने की जरूरत नहीं है। कैसा इनेबल्ड है? आपका आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस लेकर के। अब जिनको नेट का कॉन्सेप्ट पहले से पोर्ट 2 पता वाला। है हाँ। वो तो समझ गए होंगे इस बात को। अब जिनको नहीं पता है तो टेंशन ना लो, मैं आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा आपको डिटेल में नेट क्या होता है और कैसे आप नॉर्मल सिनेरियो में यूज करते हो इन योर सिस्को इन्वायरमेंट, और कैसे आप फोर्टीनेट के साथ उसको यूज करोगे। सो मैं क्या करूंगा, तो एक बार फिर से सर आपको बता इसमें देता हूँ। एसडी वैन का भी कॉन्सेप्ट होता है ना? एसडी वैन का कॉन्सेप्ट है, जी है, बिल्कुल है। एसडी वैन का भी कॉन्सेप्ट है। तो हम कोशिश करेंगे इसको इनिशियल से स्टार्ट करके, स्टार्टिंग से, फिर थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में उसको देखें एडवांस टॉपिक तक, एसडी वैन वाला पे। गुड ओके सर। guys, any question? Because this was it for the day. Any question or any suggestions, anything you want from us from this, please come and ask. Deepak, Shubham, Ayush, Rahul, Lakshman, Javed, Sir, Yakub. practical should be in Hindi only, sir. Amit sir, can you tell me more about the PAT, that is the port address translation? It will be good for me. And how Yeah, it is work in a definitely, firewall? definitely. Okay, sure. Rahul Singh, Rahul K, Abhiram, Abhiram is here.
anyone have apart from Rahul's question, anyone wants to know more? वो तो शायद आप कल से शुरू कर रहे हो क्या? ओके, ठीक। हाँ, जाहिर सी बात है कल से करूंगा, लेकिन अगर राहुल आपको भी जानना है क्या ये एनपैट वाला, तो जानो, ये लो। No problem, sir. No problem. If you want to अरे continue tomorrow, it will. नहीं नहीं, वो तो मैं तो सारा बताऊंगा। आप उसके लिए देखो, ये जो एक्सप्लेन करने वाला बताइए तो गाइस सर। पार्ट है ना, एक्सप्लेन करने वाला जो पार्ट है गाइस, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब आई हैव माई ओल्ड स्टूडेंट इन दिस क्लास, लेट मी टेल यू। मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। शुभम इज हियर। शुभम कैन टेल मोर अबाउट मी, like it's been more than 1 year he is a regular student of mine. Yeah, So, I've been with sir since a long time. अभी CCNP उनका खत्म हुआ है, CCI पढ़ रहे हैं मेरे से। अब पॉइंट क्या है गाइस, ये समझो आप। why anyone will stay with you? Reason is if that person is getting benefited, okay, right? और उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लास है 101 है, तो जाहिर सी बात है चार्ज भी बहुत हाई ही होगा उनका। तो अब पॉइंट ये है, क्यों कोई रुकता है? क्योंकि भाई उसको बताना है। देखो मेरा पर्पस क्या है गाइस, मैं एक ऐसा कोई भी चीज आपके लिए नहीं छुपा पाऊंगा यहाँ पे, मेरे आदत में ही नहीं है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने बताया ही नहीं। नहीं, वो होगा ही नहीं। हाँ, हो सकता है आपके मन से कोई प्रश्न ना आए आपके माइंड में उस समय, क्योंकि टिल द टाइम आप उन सब सिनेरियो में होते नहीं, उस सिचुएशन में गए नहीं हो, इन योर कंपनी इस तरह का आपने चैलेंज नहीं फेस किया, तो माइट भी आपके पास वो क्वेश्चन ना आए ब्रेन में। लेकिन क्योंकि मैं जा चुका हूँ, 15 साल का मतलब होता है यार 60 साल हमारी उम्र है इंसानों की, तो 1/4 तो बिता ही दी मैंने ट्रेनिंग में, है ना। तो वन अगर इतनी बीत गई, ऑब्वियस सी बात है कई सारी चीजें हमें पता लगी होंगी ना। 1 साल 2 साल में पर्सन इतने सारे चैलेंजेस देख लेता है कंपनी के अंदर, ये तो 15 साल हो गया जी, है ना। उस हिसाब से तो आपका कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। अगर फिर भी बचता है तो फील फ्री टू आस्क, आई एम हियर। मैं यहाँ पे हूँ, टीम है यहाँ पे, मैनेजमेंट टीम है ना, नेक्स्ट जेन की। सर यहाँ सो पे एमपीएलएस लाइन और वीपीएन लाइन एक ही नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? कहाँ पे सर? एक ही नेटवर्क के लिए वीपीएन और एमपीएलएस लाइन हाँ हाँ जी, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें, किसमें? फोर्टिनेट में? फॉर्टिनेट में? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसका सिनेरियो कैसा रहेगा सर? हाँ, सिनेरियो फिर आने दो, फिर दिखाएंगे आपको कैसे होगा। ठीक है सर। थ्रू आउट द कोर्स, अभी तुरंत बताऊंगा तो आपको, हमें नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, लगता कि सही समझिए। जस्ट क्वेश्चंस। हाँ, नो इशू, नो इशू, आई एम फ्री। एनी क्वेश्चन यू हैव, कम विद दैट, विल क्रैक इट आउट, ओके, विल नॉक इट आउट ड्यूरिंग द सेशन। अगेन वही बोलूंगा कि ये आपका सिर्फ काम है, क्वेश्चन लाओ, मेरा काम है उसे आपको मैं समझाऊं, ओके। क्योंकि कल के सेशन में कुछ ये बताया गया था कि फॉर्टिनेट से बता पाल्मो जो फायरवॉल है वो बेटर है। करेक्ट, बेहतर देखो, बेहतर सारे हैं, कोई खराब नहीं हम्म, है। अब डिपेंड करता है आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आपके कंपनी के पास बजट नहीं है, फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी का बजट नहीं है भाई, और उसे फायरवॉल भी लगाना है, तो कौन सा लेके आएंगे हम, बताओ। हम लोग तो एक्चुअली सिस्को फायरवॉल यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्रिटिकल है वो, नेटिंग करने में, रूल्स बनाने में बिल्कुल है भाई, मैं बहुत बोल तो रहा हूँ प्रॉब्लम वहीं है पे। जो है। आपने अरे फोर्टीगेट में देखा कि देखो नेटिंग इफ नहीं हो गई गुड। थी। हाँ, इसमें ऑलरेडी दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ एंड्रॉइड फोन आता था ना पहले, किसी भी हम्म। बंदे को दे दो कुछ देर में चलाना सीख जाता था वो, वही है ये। ये वही है, लिटरली बिलीव मी गाइस। और इससे सिंपल मैंने लैंग्वेज में या हमने बोलो तो बोलो। यूज नहीं किया है, बट अभी सोच रहे हैं अभी लेने का। हाँ ठीक है, तो अगर इसका एंड कंपनी ऑफ का सपोर्ट बजट। वगैरह मतलब कितने साल तक है सर? सर देखो, जब आप लाइसेंस लोगे हो तो आपको बताएंगे ही, बाकी टैग के संपर्क में रहो। बाकी जिस अच्छा वेंडर अच्छा। से आप ले रहे हो ना, प्री सेल्स वाला जो पर्सन है ना, उससे सब हम्म। कुछ आप लिखित में ले लो, रिटर्न में। जाहिर सी बात है लिखित में ही देगा, कंपनी के लिए लोगे आप। जी जी जी। तो पॉइंट ये है कि वो सब कुछ देगा, लेकिन लाइसेंस का डिपेंड करता है कितने दिन का आप लाइसेंस ले रहे हो। अब ऐसा कोई ओपन आंसर नहीं है इसका। सर और कई बार वो फॉर्टिनेट में लाइसेंस को ना, कितने? और एक बात पूछनी थी सर। हाँ जी, जैसे हम लोग अभी सिस्को फायरवॉल यूज कर रहे हैं, हाँ तो जी, उसके रूल्स, ये जो पोर्ट वगैरह है, इसमें इंपोर्ट कर सकते क्या? सॉरी आई या डिडंट कम अगेन। अभी हम लोग फिलहाल अभी सिस्को फायरवॉल यूज कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें जो भी नेटिंग हुआ है, एक्सेस रूल बना है, जो भी रूल्स बने हुए हैं, वो सब इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, या कोई आ, नया देख नहीं, के फिर से बनाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है फिर से बनाना पड़ेगा सर। इंपोर्ट कर सकते हो अगर, समझो बात, हाँ।
इंपोर्ट कर सकते हो कुछ ऐसे सर्विसेज की चीजों को, जैसे कि आपने सिस्को आइस लगा रखा है अपने आप। क्या लगा रखा है? सिस्को आइस। आपने डीनैक पे सब कुछ डाल रखा था, डीनैक अंडरस्टैंडिंग इट, हम्म। डेटा डीएनए सेंटर, वो यस। उस पे है कुछ चीज। तो डीएनए सेंटर आपको सर्विस देता है कि आप डिफरेंट वेंडर को भी उस पर लैंड करा दो, सेम वेंडर को भी करा दो। अगर डीएनए सेंटर का आपके कंपनी में लगा हुआ है तो आप वहां से बिल्कुल टेम्पलेट को वहां पे कर सकते हो अप्लाई। लेकिन डीएनए सेंटर होना भी तो जरूरी है फिर ना। और डीएनए सेंटर बहुत ही कॉस्टली वो है, सोल्यूशन है। बिल्कुल ही नहीं है वो, नए रूल बनाना ही पूरा। सो कोई इशू नहीं है, मोस्ट फोर्टीनेट प्रोबेबली पे तो आई इजी बी। होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। एक आईपी का पूल बना दोगे आप, उस स्टैटिक राउट भेज दोगे, उसके अंदर फायरवॉल में इंटरनल यूजर्स के लिए लगा दोगे आईपी, और एक एक्सटर्नल यूजर के लिए आईपी लगा दोगे हाँ नेटिंग कोई के बात लिए। नहीं, ज्यादा दैट से इज ज्यादा। गुड, बट जब कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है तो फिर हमें बहुत चीजों का ध्यान देना पड़ता है शुभम ना। जैसे कि हाँ। डाउन टाइम ना हो। करेक्ट। हम्म। डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन, मान लो कोई ई कॉमर्स कंपनी में है, अब बताओ आप उसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कितना डाउन टाइम में हम्म। बेचारा करेगा एफोर्ड, राइट? तो ये तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो हाँ वो तो बात है, बहुत सारी चीजों मेंटेनेंस का का टाइम रात में फिर, और क्या। तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो हमें टाइम नहीं देते, क्यों एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं कंपनी में? गाइज अंडरस्टैंड दिस रीजन। आपको क्या लगता है कि आपको नॉलेज क्यों होना चाहिए? ये एक रीजन नहीं है गाइज। हम जो होते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स, बैकबोन होते हैं किसी भी कंपनी का। हम्म। अगर नेटवर्क ही नहीं अप है तो कंपनी ठप है। बात जी समझ बराबर है सर, रहे? बराबर सिंपल है सर। लॉजिक। सो अब हमें इतना स्मार्ट होना है भाई, सेम टाइम पे वो काम भी कर पाए। चलो ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको अपने कंपनी का नेटवर्क माइग्रेट करना है। आपकी कंपनी पहले किसी दूसरे नेटवर्किंग इंफ्रा पे काम कर रही थी, नेटवर्क स्कीमा लगा हुआ था। अब अदर नेटवर्क स्कीमा आपको लगाना है, क्या करोगे अब आप बंद तो कर नहीं दोगे, राउटिंग हो रखी है, सारे यूजर्स को आईपी मिल रखी है, हम्म। टीसीपी इनेबल्ड है। अब आप इंजीनियर हो ना, अब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप तो पहले सब कुछ डाउन कर दोगे। और जब डाउन कर नहीं दोगे तो नहीं, फिर कंपनी बोलेगी भाई क्यों हो आप फिर। आप डाउन रात क्यों में किए? करेंगे ना सर मेंटेनेंस, तो फिर रात में होता है ना ऐसे मेंटेनेंस, तो रात में भी कर नोटिफिकेशन। सकते हैं, हम वर्किंग में भी कर सकते हैं, वही बोल रहा हूँ। वेन एवर यू गाइज विल हैव हम्म। नॉलेज, आप हो सकता है कि माइग्रेट करने के लिए आपको जरूरत ही ना पड़े, आप सेकेंडरी आईपी यूज करके सब कुछ डिप्लॉय कर दो। हम्म। हो सकता है आप डिफरेंट एक लाइन ले लो, उससे डिप्लॉय कर दो सब कुछ। सब कुछ आपने टेस्ट कर लिया, धीरे धीरे आपने एक नेटवर्क का डाउन टाइम लिया भाई, 5-10 मिनट का डाउन टाइम दे दो। आपने डाउन टाइम विंडो बुक कर लिया, इन्फॉर्म कर दिया सबको, सारे प्रोडक्शन वालों को, कि भाई इस समय से समय तक वेबसाइट वगैरह नहीं चलेंगी। सो इसी समय तक नहीं चलेंगी, हमें कुछ टेस्ट करना है। आपने टेस्ट किया, डन हो गया, वो वाली लिंक अप कर दी। बाकी धीरे धीरे आपने स्विच कर दी। तो इसी तरह का अप्रोच होता है कंपनी में। अगेन, जैसा कि किसका क्वेश्चन था, प्रवीण आपका था ना? जी। तो अंडरस्टैंड, आपने बोला कि मैं माइग्रेट कैसे कर पाऊंगा, मुझे स्विच करना है अपने सारे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को फोर्टिनेट पे बाई चांस अगर आपको करना है। तो गाइस समझो, आपके कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ होगा हर चीज का। हम्म। तो जितनी चीजें लगी होंगी, कहाँ पे डिजाइनिंग टीम ने आपको सब दिया होगा बना के ना, कि ये वाला जी। प्रोग्राम, ये वाला प्रोटोकॉल रन हुआ है, इस इंटरफेस पे ये वाली आईपी है, ये वाला रूल मैंने क्यों लगाया है, इन यूजर्स को एक्सेस नहीं देना है, इन यूजर्स को एक्सेस देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग विल बी देयर इन डॉक्यूमेंटेड मैनर। सो सही पर सही नियम क्या है, फर्स्ट मैप दैट डॉक्यूमेंट विद योर फोर्टिनेट। पहले उसको मैप कर दो फोर्टिनेट के साथ में, इसका भी डॉक्यूमेंट बनवा लो उनसे। वंस दैट हम्म। इज रेडी, देन स्टार्ट डूइंग इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अगर उस पर कोई हेल्प चाहिए, लेटर ऑन आई हेल्प विद मेनी ऑर्गेनाइजेशंस टू डू सो, सो यू कैन कम अप अगेन विद दैट रिक्वायरमेंट। ओके, आप या तो कंपनी में बात कर लेना नेक्स्ट जेन में, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, यू हैव एनी डिस्कशन, यू कैन डिस्कस। फॉर द सपोर्ट पार्ट यू कैन टॉक टू नेक्स्ट जेन डिपार्टमेंट। ओके, any question guys, otherwise we are already done. Sir, Amit, I have Rahul sir here. Yes, yes sir. Sir, can you tell me about this SFP module? We have Which a small module, form sorry? SFP module. We have first module which we connected in the firewall. So SFP SFP module module, right? Small, that is small. pluggable thing, right? Yeah. सो सर मेरे साथ अभी क्या हो रहा है कि हमने हमारी दो लिंक है, टाटा की लिंक है, हमारी एमपीएलएस लिंक। तो हमने हाँ। प्राइमरी लिंक को पोर्ट नंबर एसएफपी पे पोर्ट नंबर 1 में रखा है। फिर हम्म। हमारा जो फेल ओवर हो रहा है वो एसएफपी पोर्ट नंबर 2 में है। सो हम्म। हो क्या रहा है, जब वो फेल ओवर होता है, सेंस अगर मेरा टाटा का फर्स्ट वाली प्राइमरी लिंक फेल होती है, तो वो फेल होकर सेकंड में आता है, बट वो क्या हो रहा है कि वो सेकंड भी एक्टिव नहीं होता वो टाइम पर। और टाटा ओ। पे हमने टिकट रेस करी,
हाँ, तो हमने टाटा में भी टिकट रेस करी, तो वो उन्होंने हमको ऑन ग्राउंड विद प्रैक्टिकल प्रूफ कितने हमारे पैकेट आ रहे हैं इनकमिंग उनके साइड से, वो बोल रहे हैं कि आपके फायरवॉल में प्रॉब्लम है। हमारे पास अभी जो फायरवॉल है वो सिस्को का ASA 5500, उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं अभी, अब तो उसका पूरा फर्मवेयर वगैरह सब कुछ अपडेट कर दिया था हमने। बट फ्रॉम लास्ट 3 days I'm we people are very tired of all these things, and we have only Saturday and Sunday to get our project live. Okay, तो वो so I फेल think ओवर नहीं हो रहा हमारे। okay, एंड so सर how एंड can I? वन मोर थिंग, Yeah, please. हमने सर इस केस हमने सिस्को को भी टिकट रेस करी, एंड सिस्को people are taking 10 land of for a firewall for last 3 days, and for a 12 hours, 15 hours, we are continuously providing anything what they want, including the admin password and also. तो अब हम ये Okay. नहीं समझ पा रहे हैं कि वो फेल ओवर होने के बाद भी क्यों नहीं पोर्ट नंबर 2 एक्टिव हो रहा हाँ हाँ. है, और Okay, so रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड actually ऑल, तो वो continue होता है। हाँ, तो मैं बोल देता हूँ। अब बाकी क्वेश्चन अगर है डिटेल में, देखो इसमें दो एस्पेक्ट है। फर्स्ट की पहले तो अगर सिस्को की टीम हेल्प कर रही है आपको तो दे आर मोस्ट एक्सपर्ट पीपल, ओके। और दूसरा, आप उनसे डॉक्यूमेंटेड में ले ही रहे होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपकी टीम अगर आप इस लेवल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने डॉक्यूमेंटेड सब कुछ लिया होगा। सो वंस दे आर नॉट एबल टू डू दैट तो उनसे आप पूछो भाई कितना समय लगेगा, व्हाट इज द टेट एटसेट्रा एटसेट्रा, दे विल सॉल्व इट, नो इशू। बट अगर बात आप मेरे से करते हो कि क्या ऐसा कुछ है, तो मैं एक सिंपल सा चीज बोलूंगा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता आपका डिजाइन क्या है जी। मुझे नहीं पता आपने कहाँ पे क्या चीज कैसे टर्मिनेट कर रखा है। और मुझे ये भी पता है कंपनी अलाउ भी नहीं करेगी आपको किसी को आप दिखाओ, करेक्ट। सो डू वन थिंग, लर्निंग इसमें क्या है राहुल, लर्निंग इसमें ये है कि बी इन टच विद देम एंड अंडरस्टैंड एवरी पार्ट दे आर डूइंग एज इम्प्लीमेंटेशन और एवरीथिंग दे आर डूइंग एज अ टिश्यू, और सब कुछ डिटेल्ड वर्जन में उनसे लो। सो गोइंग ऑन एटलीस्ट यू विल हैव आइडिया व्हाट वाज द हैपन, व्हाट वाज द इशू अकर्ड एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन फॉर दैट, ओके। सो ये हो सकता है अभी का उपाय, ये मेरा सजेशन है आपको। बाकी आगे मैंने बता दिया कांस्टेंट कहाँ आता है। कांस्टेंट आता है फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर, अंडरस्टैंडिंग इट, if you are able to design, then you can ask okay here is the issue we are facing, then we can go ahead and do the issue, understood। अब ऐसे सुन के तो जाहिर सी बात है, अगर आप बता रहे हो कि टैग टीम नहीं कर पा रही है उसको अभी सॉल्व, 3 दिन हो गया टिकट डाला है, हम अपना पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दे रहे राहुल सर, हैं। यस यस यस। राहुल सर, ये प्रॉब्लम हमने भी फेस किया था अभी ये 4-5 दिनों में। यार आप मुझे सर मत बोलो, आई एम ओनली राहुल। ओके ओके राहुल, सो हमने भी ये प्रॉब्लम अभी फेस किया था। उसके लिए भी आपके आपके नेटवर्क लाइन में 2 मीडिया होंगे, एक FPLS BSNL और कुछ वेंडर होगा, ठीक है। और उसके यस, बाद फायरवॉल है, फिर आपका नेटवर्क है। करेक्ट। जी बराबर है। आप हाँ एक काम बराबर, करो बिल्कुल। सर, आप एक काम करो, आपको एक था आपके पास अगर कोई राउटर वगैरह है तो उसको कॉन्फ़िगर करो और फायरवॉल जो है उसको बाईपास करो थोड़ी देर के लिए। ओके। थोड़ी देर के लिए बाईपास करो और पैकेट जो है वो ट्रेस करो। आपको खुद ब खुद प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे, पैकेट्स कहाँ से नहीं आ रहे। वहां से ओके पुशअप ओके करने को बताओ, यहाँ से भी ट्रेस आउट मारो। डन एक्चुअली डन 2 मीडिया करेक्ट। रहते हैं, हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं रहता है। सबको लगता है कि एक एंड से प्रॉब्लम होगा, एक एंड से प्रॉब्लम होगा, बट वो प्रॉब्लम रहता है मीडिया का। जो हम लोग वेंडर जो कनेक्ट करते हैं उसका प्रॉब्लम रहता है वो। या गुड, ओके सो करो आप ओके इसको सर, ओके, नाइस। सही बोल रहे हैं, ये भी एक रीजन यस, हो सकता है। विल डू बाकी इट, I'll do it and get back to you definitely. Thank you Praveen, वन thank you. 1800 1900 जैसे राउटर सभी बहुत सारे पुराने पड़े होंगे बैंक में, या कोई आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे पड़े होंगे। उसको 2 मिनट में कॉन्फ़िगर करो और उसको बाईपास करो फायरवॉल से। आपको खुद ब खुद प्रॉब्लम मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। गुड। Okay, fine. And Praveen sir, my next question is that do you have any knowledge of this EPBX? जी EPBX, that device, they will generate a dial tone नो सर, under after आई हैव नो microphone. आइडिया। Okay, fine, fine. ओके, सो नो इशू,
These are, I think, question from outside of the outside of the Fortinet. No issue. We'll be talking about that. But I think any question related Fortinet, guys, from anyone? Yes. सर कंपनी में फोर्टिनेट पे कितने सारे फीचर्स चलते हैं, मतलब मोस्टली कितने फीचर्स चलते हैं जो अभी ये इंटरफेस पे इतना डैशबोर्ड पे इतना शो हो रहा था, वो सारे चलते हैं या मोस्टली मीन्स पर्टिकुलरली कोई चीजें चलती है? तो जब हम बात करते हैं फीचर का, तो अगेन डिपेंड कर जाता है रिक्वायरमेंट पे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कुछ कॉमन चीजें। जैसे आप अपने कंपनी में जब फायरवॉल को डिप्लॉय करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप नेक्स्ट जेन फीचर्स को इनेबल करके रखते हो, सिक्योरिटी का नेक्स्ट लेयर देने के लिए। करेक्ट। जैसे आपके कंपनी में सिर्फ एक फायरवॉल नहीं होता, अगर बहुत छोटी नहीं है तो। थोड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसमें कई सारे फायरवॉल लगे होते हैं, और कई सारे फायरवॉल का काम अलग अलग होता है। ठीक है। क्यों होता है अलग अलग? सो दैट कि अच्छे से कर पाए वो काम को। ओके। एक ही पे सारा लोड नहीं होता, एक ही इंजन पे। अगर एक ही इंजन पे सारा लोड होगा तो होगा क्या, वहां पे आपको स्पीड सही नहीं मिलेगी। इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट इंजन पे वो डिवाइड करके रखते हैं चीजों सर को। अभी मेरे यहाँ पे फोर्टिनेट का छोटा डिवाइस दो रखा हुआ है, लेकिन उसको एसडी वैन के इसमें यूज करते हैं, हाँ ना हाँ। कि उसे एज अ फायरवॉल। ओनली एसडी वैन के इसमें कंसीडर करते हैं। यस, करेक्ट। देखो आप खुद ही बोल रहे हो ये सिनेरियो है ना। तो वही चीज हाँ मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि वही रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी का क्या क्या सुझाव है, क्या जो उसके डिजाइनर हैं वो क्या बोलते हैं ना, जो डिजाइनिंग टीम है वो क्या बताती है आपको। जब आप जाते हो सोल्यूशन डिजाइन करवाने अपने कंपनी के लिए, तो व्हाट हाँ डिजाइनिंग टीम इज रिफरिंग यू एंड व्हाट दे आर डूइंग एज अ गिविंग यू एज अ डॉक्यूमेंटेशन। तो सब कुछ अप्रूवल वगैरह आके फिर आपको जब मिलता है, तो इम्प्लीमेंटेशन टीम सब कुछ करके फिर वो किसको, ऑपरेशंस को हैंड ओवर कर देती है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हम नहीं डिसाइड करते। हम लोग अगर नेटवर्क इंजीनियर है, हमारा काम है मॉनिटर करके इशू को मॉनिटर करते रहना, और चीजों को मॉनिटर करो, इशू आए तो उसको सॉल्व करवाओ, तो हमारा काम ही हो जाता है बाद में। लेकिन वही कि आप एक ही अप्लायंस को हर चीज के लिए नहीं लगाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा हाई सिक्योरिटी आप कर दोगे अपने नेटवर्क की, उतनी ही ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दे शुड बी इन बैलेंस्ड अप्रोच। परफॉर्मेंस भी ठीक होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी ठीक होनी चाहिए अपनी जगह पे। तो बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको डिजाइन करा जाता है, सो दैट परफॉर्मेंस भी अच्छी आए। पता लगा है कि यूजर google.com पे जाना चाहता है तो उसको 1 मिनट लग रहा है लोड होने में, तो सही बात नहीं है ना। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी 100% है, क्या मतलब है उसका? और सर इसमें अभी अपना राउटर स्विचेस का पार्ट्स तो होगा ही नहीं ना, ओनली फायरवॉल्स लाइक राउटर पॉलिसी। का पार्ट बताऊंगा जी। जी, ओके, राउटर का पार्ट। डोंट वरी, आई विल टेल राउटर यू यार। राउटर पे भी चीजें बताऊंगा। जैसे अगर मैं राउटिंग करवा रहा हूँ, राउटर पे भी करूंगा वो, और उसको फायरवॉल पे भी करूंगा, तो दोनों को एक साथ में मिक्स करके देखेंगे हैं। ओके सर। सो राउटर का बहुत सारा पार्ट आप देखोगे, विंडोज का पार्ट देखोगे, सर्वर का, विंडोज सर्वर का कुछ पार्ट देखोगे, जहां पे हम ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे, राइट। ट्रिपल ए वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा तो ये सारी चीजें आप देखोगे। आपको विंडोज सर्वर भी देखने को मिलेगा, जहां से हम एल डैप वाला पार्ट करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से हम उठाते हैं यूजर्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी थिंग्स यू गाइज विल सी। सिर्फ फोर्टिगेट फायरवॉल का ही ट्रेनिंग नहीं है ये, इंटीग्रेटेड डिवाइसेस की भी ट्रेनिंग है। लाइक सिस्को का आपका राउटर, स्विच, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें, विंडोज पीसी, लिनक्स पीसी, ऑल दो, काली लिनक्स अटैक करने के लिए, और उसको फिर देखने के लिए किस तरह से अटैक होता है, लाइक डीडोस अटैक कैसे होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अंडरस्टूड? ओके गाइज, सो यस। दिस वाज इट फॉर द डे। सर एक बात पूछनी थी, और जस्ट लॉजिकल पार्ट। जी। फोर्टिनेट फायरवॉल जो है, हैकर्स के लिए कितना से सिक्योर हो सकता है? हैकर्स के लिए कितना सिक्योर हो सकता है, मतलब हैकर हैक कर रहा है कुछ? हाँ, शायद अभी क्या है, अपनी इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है सर, अभी कुछ भी हैकर्स कर रहे हैं अभी। तो ओके, गुड। सो फोर्टिनेट एडवांस डिवाइस है अपने आप में, ठीक है। तो हाँ, बहुत सेफ है वो। आप जितना सोचते हो अदर हैं वेंडर्स, उतने ही सेफ आपका फोर्टिगेट भी, ठीक है। अरे पोलो ऑल्टो का भी मैंने काफी नाम सुना, तो क्या कुछ मतलब वो भी कुछ मतलब फोर्टिनेट से भी अच्छा है क्या? वो क्या सीन है, मतलब पालो भाई ऑल्टो और वही इसका वाली बात अलग? है, अच्छा और बुरा कोई नहीं है, ठीक है, समझो बात को। अच्छा। अच्छा बुरा कोई नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, दैट डिपेंड्स ऑन द इंजीनियर्स
you have in हम्म your company. For example, मैं अभी सर जाऊं, अभी आप में से किसी की कंपनी में जाऊं, बोलूं ISIS अपने पे डिप्लॉय करो, वो SPF को हटाओ, हम्म ISIS एज अच्छा अ राउटिंग प्रोटोकॉल डिप्लॉय कर लो, कोई नहीं करेगा। हम्म क्यों नहीं करेगा? आता नहीं किसी को। क्यों नहीं आता? हम्म क्योंकि भाई उतना लोगों ने उसको दिया ही नहीं जलवा। क्यों? क्योंकि भैया इस सर्विस प्रोवाइडर वाला बंदा जानता है सिर्फ इसको। नहीं, ISIS इज फार बेटर देन OSPF, लेकिन बंदों को नहीं पता, इसलिए बोलेंगे नहीं भैया हम नहीं लेंगे इसको। बहुत ही सिंपल है वो, लेकिन वो बंदे नहीं लेंगे क्योंकि बस उनके पास इंजीनियर्स नहीं है उस पर ट्रेंड। तो अगर मान लो आपकी टीम में बहुत सारे बंदों को सिस्को आता है, तो आप उनको बोलोगे सर कौन सा डिप्लॉयमेंट किया जाए, बोलेंगे सिस्को कर दो। क्यों? बोले उनको ये आता है भाई, कोई प्रोडक्ट हम्म खराब बुरा नहीं है भाई। अब वहां पे जो अपर अच्छा मैनेजमेंट में बंदा बैठा है, जो सीनियर लेवल पे है, वो बंदे कोई नहीं आता। सिस्को क्यों हर चीज आपको इवैल्यूएशन लाइसेंस में फ्री में दे देती है 90 दिन के लिए लगभग? हम्म इसीलिए देती है कि गो गाइस एंड सी आवर प्रीमियम फीचर्स, वंस यू विल डू यू विल नो, यू विल कम टू अस टू परचेज दैट प्रोडक्ट। इसीलिए सिस्को फ्री में हम्म देती है, फोर्टिनेट फ्री में नहीं देती नेक्स्ट जेन फायरवॉल फीचर। लेकिन आपको हम्म फायरवॉल अगर आप FTD वगैरह लोगे फ्री में दे देगा आपको। क्या लॉजिक है? हम्म सिस्को बहुत इंटेलिजेंट है मार्केटिंग में। हाँ, बहुत हार्ड, बहुत ज्यादा कठिन भी है, और साथ में बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है सिस्को का प्रोडक्ट। लेकिन अब कंपनी में अगर आपके अच्छा किसी को आता ही नहीं कोई चीज, सिर्फ सिस्को आता है, तो बोलेंगे सिस्को ले आओ, हम्म फंस गया काम। तो एक्चुअल में अच्छा रिक्वायरमेंट यहां से बनती है। रिक्वायरमेंट यहां से बनती, कितने लोग जानते हैं पालो ऑल्टो को, रिक्वायरमेंट यहां से बनती, हम्म कितने लोग जानते हैं सिस्को को, रिक्वायरमेंट बनती, हम्म कितने लोग जानते हैं फोर्टिनेट को। सारे लोग फोर्टिनेट जान जाएंगे, फोर्टिनेट चलने लगेगा बूम पे। फोर्टिनेट नीचे भी नहीं, हम्म फोर्टिनेट भी टॉप 5 से में ही आता है ये भी, हम्म राइट? यस। सर अब अगर नंबर आप ये 1 पे बोलोगे, मैंने सुना। हाँ जी हाँ जी, अच्छा इस सिस्को के इसमें सिस्को का फायरवॉल पालो ऑल्टो का फायरवॉल इसमें गुई नहीं होता क्या? होता है सर, सब में गुई ही है, सब अच्छा में गुई ही है, यस। एएसए में नहीं है ना सर, एएसए में सिर्फ कमांड लाइन चलती है ना। हाँ, ऐसे में नहीं है। ऐसे एफटीडी। क्योंकि ऐसे जब बना था उसकी स्टोरी है, ऐसे राउटर से इन्होंने ऐसे बना दिया था उसको। आप बात समझ रहे हो? राउटर लिया, राउटर में कुछ हम्म IPS के फीचर इन्होंने डाले और उसको बना दिया ऐसे। बताओ, इसीलिए तो उसमें अच्छा CLI ज्यादा है। राउटर आपका CLI पे काम करता है कि गुई पे काम करता है, सोचो एक बार। CLI बहुत इसलिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, सर ये से। अच्छा नहीं अभी ट्रेनिंग लो आप, फिर समझ में आएगा। ऐसे का भी पढ़ लो सर, एक कभी नहीं कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। Sir, again Rahul here. I have a one more question to you. हे राहुल इज हियर, यस प्रवीण। Rahul, लक्ष्मण। सर सर मेरे कंपनी में हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इट इज वेरी क्रिटिकल काइंड ऑफ लाइक वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑन पैरेलली। तो तो सर हमारे पास क्या है कि हमको हर 3 महीने में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, और हमें हर 3 महीने में डोंट इमेजिन सर कि वो ऑडिट रिपोर्ट उन लोग वैलिडेट करते हैं ऑन प्रीमाइसेस आके, और ऑन ग्राउंड सारे मैनेजर को खड़ा करके वो लोग मतलब जो भी लूप होल्स है उसको टारगेट करते हैं। एंड एवरी टाइम फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर मतलब आई एम हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट, हम हर ऑडिट में हम लोग फेल हुए। तो ऑडिट के बारे में हम लोग इसमें कुछ मतलब हमारे आगे आने वाले डिस्कशन होगा। यू आर टॉकिंग अबाउट VAPT। हेलो। Mute- अमित सर म्यूट पे चले गए शायद सर you have muted your mic. It seems that you might be talking but we are not able to hear you. ओके ओके। Guys, we can end up today's session. I think sir has, different class for today. So we can, connect by tomorrow, same time, 11 a.m. for Fortinet Firewall. So rest question you can ask by tomorrow. I hope that will be fine for everyone. ओके ओके ओके, Okay, थैंक no यू। issue, sir. Thank you very much. Yeah, thanks for bearing with थैंक यू us. थैंक सर। यू सर, थैंक यू Thank you सो मच guys. फॉर Good दिस। day. थैंक यू Thank सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड विल मीट यू टुमारो at the same time, I think. Yes, Yes. till the time, keep learning. Bye. Thank you. Good day, guys. Thank you, sir. you Good sir. day. Thank you everyone. Thank you.